Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about the nursing care plan, that is substance abuse, and through this video you will learn this nursing care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सब्सटेंस अब्यूज़ का नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान ऑन सब्सटेंस अब्यूज़। नर्सिंग केयर प्लान में हम यहाँ पर डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन। यहाँ पर हम टोटल 7 नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। तो नर्सिंग केयर प्लान से पहले देखते हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ substance abuse। तो देखते हैं इसमें substance use disorder involve using too much alcohol, tobacco, cocaine, opiate or other drugs. It can also called substance abuse, substance dependence or addiction. Substance abuse is a pattern of harmful use of any substance for mood altering purpose. Abuse can result from using a substance in a way that is not intended or recommended, or from using more than prescribed. This is substance abuse, and nursing care plan for substance abuse. Total 7 nursing care plan in this video you learn. So देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट, इनफेक्टिव डिनाइल। ये हमारा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान होगा, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, व्हेन आस्किंग क्वेश्चन पेशेंट रिफ्यूजिंग टू डिस्कस अबाउट द सब्सटेंस अब्यूज, and objective data use dismissive behavior and gesture when addressing the conditions. This is the subjective and objective data. On the basis of these data we write here the nursing diagnosis. तो देखते हैं अपन नर्सिंग डायग्नोसिस में। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर इनफेक्टिव डिनाइल रिलेटेड टू लैक ऑफ कंट्रोल ओवर सब्सटेंस यूज। गोल होगा द पेशेंट विल पार्टिसिपेट इन ए थेरेप्यूटिक प्रोग्राम एंड एक्सप्रेस नॉलेज ऑफ द connection between substance abuse and the present situation. प्लानिंग देखते हैं, प्लानिंग इसके बाद होगा रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग मीन्स यहाँ पर हम इंटरवेंशन प्लान करेंगे, मीन्स पेशेंट को कौन कौन से इंटरवेंशन प्रोवाइड कराने हैं। रेशनल मीन्स व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान। मीन्स जो हमने इंटरवेंशन और प्लानिंग तैयार किया उसको अप्लाई करना, मीन्स उसको एक्शन में लाना। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट इंटरवेंशन, असेस द पेशेंट परसेप्शन ऑफ देयर प्रॉब्लम। रेशनल होगा दिस शुड हेल्प डिटरमाइन द extent of the patient's denial and individual perception of the substance use and abuse. Implementation होगा assess the patient perception of their problem. Number second, assess the patient's perspective of substance abuse on their life. Rational होगा denial is considered on the of the most resistant symptoms of the substance abuse. Implementation होगा assess the patient's perspective of substance abuse on their life. Number third, convey an attitude of acceptance while separating the individual from their behavior. Rational होगा this will help promote feeling of self-worth and dignity for the patient. Implementation होगा conveyed an attitude of acceptance. Number four, provide correct information about the patient's condition. Rational होगा providing correct information will help the patient make informed decisions regarding accepting their problem and choosing an appropriate treatment. Implementation होगा information provided. Next देखते हैं नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन, आंसर द पेशेंट क्वेश्चन ऑनेस्टली एंड फैक्चुअली। रेशनल होगा दिस हेल्प promote trust which is the basis of therapeutic relationship. Implementation होगा यहाँ पर answer the patient question honestly and factually. Number 6, discuss the consequences of continuing substance abuse. Rational होगा a patient who dismisses the magnitude of the situation may need consequences presented matter of factually. Implementation होगा discuss the consequences of continuing substance abuse. Number 7, provide positive feedback for expressing denial awareness in self and other. Rational होगा positive feedback can enhance the patient's self-esteem and reinforces insight into the patient's behavior. Implementation होगा positive feedback provided. Number 8, encourage
and support the patient's ability to take responsibility for their recovery. Rational होगा denial is addressed when the patient can accept their responsibility. Encouragement and support are necessary to turn deny into positive action. Implementation होगा encourage and supported. After writing these interventions, we write here the evaluation steps of care plan. तो यहाँ फर्स्ट केयर प्लान का देखते हैं evaluation. तो evaluation होगा now patient participate in a therapeutic program and express knowledge of the connection between substance abuse and the present situation. तो इस तरह से हम यहाँ पर evaluation steps जो नर्सिंग केयर प्लान का लास्ट स्टेप उसको यहाँ पर लिखेंगे. तो ये था फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान फॉर सब्सटेंस अब्यूज. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड. नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड होगा यहाँ पर रिस्क फॉर इंजरी, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल एंड ऑब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज द रिस्क डायग्नोसिस. एंड नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू सब्सटेंस अब्यूज. गोल होगा टू रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट ट्रांसफर द पेशेंट टू ए रूम नियर द नर्सेज स्टेशन. रेशन होगा प्रोवाइड मोर कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड क्विक रेस्पॉन्स टू कॉल नीड्स. इम्प्लीमेंटेशन होगा ट्रांसफर नियर टू nurses station. Number second, familiarize the patient with the layout of the room. Ratio होगा injury is more likely to be experienced by an individual if the surroundings is not familiar. Implementation होगा patient familiarize with the room. Number third, provide appropriate room lighting especially at night. Ratio होगा improvement in the lighting reduce fall and injury. Implementation होगा proper lighting available. Number four, place items the patient uses within easy reach such as call light, urinal, water and telephone. Rational होगा items that are too far may require the patient to reach out or ambulate unnecessarily and can potentially be hazard or contribute to fall. Implementation होगा place item in easy reach. Number 5, encourage assistance when getting out of bed. Rational होगा to promote safety. Implementation होगा encourage. Number 6, place bed at the lowest possible position. Rational होगा keeping the beds closer to the floor reduces the risk of fall and serious injury. Implementation of bed placed near to the lowest position. Number 7, use side rails on beds as needed. Reduces the risk of fall. Implementation of side rails used. Number 8, eliminate or drop all possible hazards in the room such as razors, sharp object, etc. This is to prevent the patient from any unpleasant experience due to dangerous object. Implementation of all possible hazards eliminated. Number 9, referring the patient to an rehabilitation program. This intervention helps the patient learn to abstain from substance abuse and developing coping skill managing difficult times. Implementation of refer the patient. Number 10, educating patient on the consequences of substance use. The patient need to understand the consequences of substance abuse and if the possible seeks help before it's too late. Implementation का education is given. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड का evaluation यहाँ पर. तो evaluation होगा यहाँ पर now risk for injury reduced. तो इस तरह से हमको यहाँ पर सेकेंड केयर प्लान लिखना है. तो ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड रिस्क फॉर इंजरी. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड. नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड हो गया यहाँ पर डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न. नर्सिंग असेसमेंट देखते हैं पेशेंट कंप्लेंट अबाउट द स्लीपिंग डिफिकल्टी. ऑब्जेक्टिव डाटा ऑब्जर्व द टायर्डनेस, मूड चेंजेस, लैक ऑफ एनर्जी, अपीयरेंस चेंजेस, डिसहेबल्ड, ट्रेस्ट, डार्क सर्कल अंडर आइज. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू सब्सटेंस अब्यूज. गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं असेस स्लीपिंग पैटर्न. रेशन होगा हेल्प इन इंटरवेंशन प्रोसेस. इम्प्लीमेंटेशन होगा असेस स्लीपिंग पैटर्न. नंबर सेकंड, असेस द इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस यूज. रेशन होगा द अब्यूज ऑफ एल्कोहल कैन कॉज insomnia. Implementation होगा असेस इफेक्ट ऑफ अब्यूज. नंबर थर्ड, एजुकेट ऑन द बेसिक स्लीप हाइजीन बिहेवियर. रेशन होगा इंस्ट्रक्ट द to establish a bedtime routine and stick to it. Implementation होगा education is given about the sleep hygiene behavior. Number 4, suggest way to improve the environment. रेशन होगा room darkening, curtain can keep out bright light if needing to sleep during the day.
implementation होगा suggested about the environment. Number 5, do not drink fluids right before bed or consume large meals. Duration होगा this cause sleep disruption. Implementation होगा advised patient. Number 6, encourage daytime physical activities but instruct the patient to avoid strenuous activity before bedtime. Duration होगा in insomnia stress may reduce by the therapeutic activities and may promote sleep. Implementation होगा encourage patient to activities. Number 7, encourage the patient to drink milk. Duration होगा L-tryptophan is a component of milk that promotes sleep. Implementation होगा encourage for the milk. Number 8, introduce relaxing activities such as warm bath, calm music, reading a book, and relaxation exercise before bedtime. Duration होगा these activities provide relaxation and distraction to prepare the mind and body sleep. Implementation introduce about the relaxing activities. Number 9, educate patient about their sleep requirement. Ratio का most people need at least 6 hours of sleep for normal memory and brain function. Implementation होगा education given. After writing these interventions, we write the evaluation steps of care plan. तो देखते हैं यहाँ पर care plan नंबर 3 का evaluation क्या लिखना है हमको. evaluation में लिखना है यहाँ पर sleeping pattern maintained. तो इस तरह से हम केयर प्लान नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4. प्लान नंबर 4 हो गया यहाँ पर पावरलेसनेस. नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज फॉर हेल्प एंड आल्सो वर्बलाइज फॉर लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल. ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं पैसिविटी और नॉन पार्टिसिपेशन इन ट्रीटमेंट प्रोसेस और होपलेसनेस. नर्सिंग डायग्नोस होगा पावरलेसनेस रिलेटेड टू सब्सटेंस एडिक्शन. गोल होगा द पेशेंट विल वर्बलाइज एरिया वेयर दे हैव कंट्रोल ओवर देयर सब्सटेंस अब्यूज. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट असेस द पेशेंट इमोशंस. रिलेशन को होपलेसनेस डिप्रेशन और अपैथी कैन बी an element of powerlessness. Implementation होगा assess the patient's emotions. Number 2, evaluate the patient's interest in decision making. Relation होगा powerlessness may cause a sense of disinterest in participation as the patient does not believe they have control over their outcomes. Implementation होगा evaluate the patient's interest in decision making. Number 3, express genuine concern. Relation होगा if a healthcare provider can show genuine concern and a vested interest in helping the patient overcome their substance abuse, it can provide a sense of hope. Implementation होगा express genuine concern. Number 4, role play assertive behavior. Relation होगा the nurse can assist the patient acting out scenarios that display assertive and confident responses. Implementation होगा role play. Number 5, help identify area of the control. Relation होगा help them identify area where they do have control, such as implementing other healthy habits, setting boundaries, and reducing contact with those who are negative influence. Implementation होगा help identifying area of control. Number 6, educate the patient and practice proactive communication skills. Relation होगा this technique help patient abstain from the substance use, establish healthy connections, and regain control of one's own life. Implementation होगा education given. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर evaluation को. तो यहाँ पर evaluation होगा the patient verbalized area where they have control over their substance used. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर को हम 4th को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5 होगा इनफेक्टिव कॉपिंग, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज दैट आई एम अनेबल टू कॉप माई सेल्फ. ऑब्जेक्टिव डाटा इनएडिक्वेट फॉलो थ्रू विद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा इनफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड टू इनफेक्टिव स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजीज और इनएडिक्वेट प्रिपरेशन फॉर स्ट्रेस. गोल होगा द पेशेंट विल यूज अप्रोप्रिएट कॉपिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन प्लेस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज. इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट असेस द पेशेंट हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज. रिलेशन होगा दिस कैन एड इन इंटरवेंशन प्रोसेस. इम्प्लीमेंटेशन होगा असेस द पेशेंट हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस abuse. Number 2, set limits and confront the patient's effort in making excuses. Rational होगा following through on the consequences of failure to maintain these limits is necessary for effective treatment.
Implementation होगा, implemented this intervention. Number third, encourage the patient to verbalize fear, feelings and anxiety. Relation होगा, this enables trusting relationship that will help the patient to come to term with unresolved or unconscious problem in life that contribute to substance abuse. Implementation of patient encouraged. Number fourth, explore alternative coping strategies with the patient. Rational yoga providing alternative coping strategies will help the patient explore more appropriate options for managing stress, feeling, and relationship without abusing substances. Implementation होगा, explored alternative coping strategies with the patient. Number four, assist in relaxation techniques, visualization and diversions. Rational yoga, this allow the patient to relax and develop new way to deal with problem and stress. Implementation of assisted in relaxation technique, visualization and diversion. Number six, encourage support available for the patient. Rational yoga support group and program will help the patient with follow through care after discharge. Implementation and encourage. Number seven, providing support and encouragement to the patient. Rational yoga and emotional support and positive reinforcement to motivate the patient to make changes. Implementation होगा, encourage and emotional support provided. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर evaluation को. तो यहाँ पर evaluation होगा, the patient use appropriate coping and problem solving skills in place of substance abuse. तो इस तरह से हम केयर प्लान नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 6. केयर प्लान नंबर 6 होगा यहाँ पर अल्टर्ड फैमिली प्रोसेस. रेशन होगा नर्सिंग असेसमेंट होगा. सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सेज अबाउट द अल्टर्ड फैमिली रिलेशंस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा असेस द पेशेंट फैमिली एंड सोशल प्रोसेस डायनेमिक्स. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा अल्टर्ड फैमिली एंड सोशल प्रोसेस रिलेटेड टू सब्सटेंस एडिक्शन. गोल होगा द पेशेंट विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन फैमिली प्रोसेस. फर्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं, एग्जामिन द पेशेंट्स फैमिली बैकग्राउंड एंड इन्वेस्टिगेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेंबर, alcohol related events, strength and opportunities for the improvement. Additional होगा, this strategies will identify the area of the focused on and the potential for changes. Implementation होगा, examine the patient's family background. Number second, educate both users and non-users on good behavior and adaptability characteristics. Rational होगा, individual can begin the change process by being aware of the understanding their behaviors, avoiding shielding, taking over the duties, justifying and subservience. Implementation होगा, education given. Number third, address the following family member sabotage behavior. Rational होगा, although family member express a willingness to be substance free, the truth of interactive dynamics is that they may subconsciously not want the pupil to recuperate because it would compromise their place in the relationship. Implementation होगा, address the following family member. Number give 4 होगा, give the patient and family accurate information of the consequences of unhealthy and addictive behavior on the family and what to anticipate following discharge. Rational होगा, most patients are unaware of the complexities of addiction. If a patient obtains medications lawfully, he or she may assume that this does not arouse abuse and dependence. Implementation of accurate information given. Number 5 देखते हैं, include family member discharge and discharge planning and follow up. Rational होगा, substance addiction is a family disease. Family member require assistance in transitioning to the unusual habits of recovery and abstinence because the family has been no involved in the dealing with the substance misuse. Implementation होगा, family member included. After reading these interventions, we write here the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर 6 का evaluation लिखना, नाउ पेशेंट पार्टिसिपेट इन फैमिली प्रोसेस. तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर 6 को हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 7. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 7 होगा डेफिशिएंट नॉलेज, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, inability to follow instructions, agitated and apathic behavior. Nursing diagnosis देखते हैं, nursing deficient knowledge related to unawareness of information or resources due to
ए lack of exposure. गोल होगा to improve the level of knowledge. Planning और intervention देखते हैं. First, assess the patient's capacity to learn. रेशनल का cognitive deficit must be identified before a proper teaching strategies can be devised. Implementation होगा assess the patient capacity to learn. Number second, examine the patient's drive and readiness to cooperate in the substance cessation program. Rational learning takes a lot of effort. Patient must see a reason or need to learn. Implementation examine the patient. Number third, determine the importance of the patient's learning need in the context of the overall care plan. Rational this is to determine what has to be stated, particularly if the patient has prior knowledge of the situation. Knowing what to prioritize will assist the nurse to avoid valuable times. Implementation होगा determine the importance of the patient's learning need. Number 4, provide the patient with a calm and relaxing environment. Rational होगा the patient can concentrate and focus more fully in a tranquil settings away from the distractions. Implementation होगा calm and relaxing environment provided. Number 5, involve the patient in the development of the substance guide plan, beginning with the establishment of the learning objectives and goal at the of start of the session. Rational होगा setting goal allow the patient to anticipate what will be discussed and what they can expect throughout the session. Implementation का patient involved in plan. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर evaluation हो गया पर knowledge improved. तो इस तरह से हम केयर प्लान नंबर 7 को कंप्लीट करते हैं. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. थैंक यू.